Good morning, students. So, welcome to our new lecture. Now, as we are discussing chapter number 1, Heredity and Evolution, we have studied about heredity in the last lecture. Now, from this lecture, we are going to see the evolution. So, in this particular lesson, we will be seeing the evolution of living things. Okay, so there are some questions you can see. The first question: what is the function of the appendix of our digestive system? So it is one of the organ which is there inside our digestive system, okay, which is called as appendix, and this appendix is hardly used by the human beings, okay, but appendix is used by another animals like cows and buffaloes, goats, okay, as this instrument, this particular organ is used to digest the leaves, okay, leaves or something which is made up of chlorophyll, okay. Then are our wisdom teeth really useful for chewing the food? No. Okay, this wisdom teeth, it is the teeth which is developed at the age of 18 to 19 years, okay. It is not developed in every person. You will find 2 out of 10 people having this particular teeth, wisdom teeth, okay. So this teeth is also not useful for chewing the food, okay. Why did the huge animals like dinosaur become extinct? तो बड़े बड़े जो एनिमल्स थे, डायनासोर है, फिर जायंट वुली मैमोथ, ओके, ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए? इसका भी जवाब हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक से मिलेगा, जो है इवोल्यूशन, ओके। देन why are many species of animals and birds are getting extinct? बहुत सारे स्पेसीज ऐसे हैं एनिमल्स के जो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट हो रहे हैं मतलब क्या, उनकी जो नस्ल है, उनका जो जनरेशन है, वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली खत्म होने आ रहा है, ओके। सो इसके एग्जांपल्स है, जैसे कि कंप्लीटली एक्सटिंक्ट बर्ड था डोडो, it has been completely extincted, okay. Then Siberian ibex is there, which is also extincted. Then now the brown bear, it is also under extinction. Then red panda, it is also in extinction. So these are the animals and species. So why these species are getting extinct? We will find the answer from this particular topic, evolution. Okay. Now generally the evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. What is evolution? It is the gradual occurring in living organisms over a long duration, मतलब कि एक लंबे समय के बाद जो चेंज आपको देखने मिलता है, जो बदलाव आपको देखने मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसे ही क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। देखो, पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे वो बहुत ही लंबे होते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप लोग देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स की जो हाइट है वो उतनी नहीं इंक्रीज हो रही है जितनी पहले होती थी। सो ये क्या है, ये एक्चुअली ग्रेजुअल चेंज आपको देखने मिल रहा है, एक चेंज देखने मिल रहा है ह्यूमन बींग्स में, होमोसेपियंस में, ओके। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले जो जानवर होते थे वो भी बहुत ज़्यादा हट्टे खट्टे आपको देखने मिलते थे, लेकिन आज के दौर में आपको ईच एंड एवरी स्पेसिस उतना स्ट्रॉन्ग देखने नहीं मिलता है, ओके। सो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, नॉट इन नॉट ओनली इन स्पेसिस बट ऑल्सो इन द क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है हमारा वो भी क्या हो रहा है, अभी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। जो एनवायरनमेंट है अर्थ का वो भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। Now, this is a very slow going process through which development of organisms is achieved. ये जो प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का वो बहुत ही स्लो होता है, ओके। जो बदलाव आपको देखने मिलेंगे किसी भी स्पेसिस में वो बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद आपको वो बदलाव देखने मिलते हैं, ओके। ऑल द स्टेजेस इन changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth shall be included in the study of evolution. So evolution मतलब सिर्फ animals या फिर plants का evolution नहीं, each and everything which is there in the universe, everything is studied in this particular branch, okay.
सो हर एक पॉइंट को स्टडी किया जाता है, हर एक कंपोनेंट का जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, whether it may be stars or planets or comets or meteors or any other celestial body or the earth itself or the biosphere which is there on earth, each and everything is studied in terms of evolution. Okay. Now, formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. So there is one more definition which is given for evolution, and it is more precise definition of evolution. So what does it states? The formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to natural selection is called evolution. तो नया स्पीसीज अगर फॉर्म हो रहा है किसी पुराने स्पीसीज में चेंजेस होने की वजह से, ओके, और वो जो नया स्पीसीज फॉर्म हो रहा है वो नेचुरली फॉर्म हो रहा है, उसके नेचुरल एबिलिटी के ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो हम उसे ही क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। Now, 3.5 billion years ago, how many years ago? 3.5 billion years ago, life had been non existent on the earth. So, there was not a single living organism on the earth 3.5 billion years ago. At the beginning, there may have been, हाँ मुझे बनाना तो है लेकिन हाँ हाँ ठीक है। So, at the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. So, what science tells us that in the beginning, when earth was formed, there was only simple element present in the ocean, कुछ elements present थे ocean में, बहुत ही simple elements, और फिर उन्हीं simple elements के बीच में reaction हुआ और फिर हमें organic और inorganic compounds देखने मिले। ओके, ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में फॉर्म हुए, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ओके, और बहुत ही लंबे समय के बाद ये जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो फॉर्म हुए थे वो कन्वर्ट होते हैं फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स में, किसमें, एक सेल में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये जो सेल है वो अगेन किसमें फॉर्म होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो बना हुआ सेल है वो धीरे धीरे उसके ऊपर रिएक्शंस होंगे, और वो फिर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा। ओके, number of those cells may have increased at a cost of surrounding chemicals. There may have been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, which could not adjust with the surrounding. बहुत सारे सेल्स फॉर्म हुए रहेंगे और कुछ सेल्स जो है वो पेरिश्ड मतलब क्या, खत्म हो गए होंगे, क्योंकि वो जो सराउंडिंग था उसको झेल नहीं पाए होंगे, उस सराउंडिंग के जो कंडीशंस थे उसको विथस्टैंड नहीं कर पाए होंगे। ओके, लेकिन कुछ सेल्स जिन्होंने ग्रोथ दिखाया होगा, ओके, which may have shown some growth, may have survived and they have been converted into some new species. Okay, now at present crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. देखो, आज के मौजूदा टाइम में, at present time, there are several species of plants and animals, and they varies according to their size, according to their complexity, according to their nutrition, according to their way of living. You will find a great diversity in plants and in animals. Okay,
So, for example, animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. देखो, अगर हम लोग एनिमल्स को कंसिडर करते हैं तो आपको बहुत ही बारीक, बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको देखने मिलते हैं, अमीबा एंड पैरामेशियम। वही दूसरे साइड में आप लोग देख सकते हैं कि एनिमल्स में आपको जाइंट वेल, मतलब सबसे बड़ा जो एनिमल है फिलहाल प्रेजेंट टाइम का, वो देखने मिलता है। ओके, तो साइज के हिसाब से बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी आपको देखने मिल गई। सिमिलरली प्लांट में भी आपको यूनिसेलुलर क्लोरेला देखने मिलता है और ह्यूज बनियान ट्री। सो बड़ा एकदम बनियान ट्री और एक यूनिसेलुलर क्लोरेला। सो अगेन देयर इज अ वेरी ह्यूज डाइवर्सिटी। Now the life exists on earth everywhere from equator to both the poles. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अर्थ में हर कोने में प्रेजेंट है, इक्वेटर में भी प्रेजेंट है, पोल्स में भी प्रेजेंट है, नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी। ओके, organisms are present at all the places like air, water, land, rock। देखो जमीन के अंदर भी organisms आपको देखने मिलेंगे, एयर में organisms प्रेजेंट है, वाटर में organisms प्रेजेंट है, और जमीन के ऊपर तो organism प्रेजेंट है ही। और रॉक्स में भी आपको क्या देखने मिलते हैं, लिविंग organisms देखने मिलते हैं। ओके, now humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such a great diversity in life present on the earth since ancient period। देखो, बहुत सारे स्पेसीज है एनिमल्स के, ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन इन सभी स्पेसीज में जो एकमात्र स्पेसीज है, द ओनली स्पेसीज विच कैन स्टडी ऑल द अदर स्पेसीज, विच कैन ऑब्जर्व, विच कैन conduct experiments, which can build and innovate, the only species which can do all this thing is human being known as homo sapiens। Okay, so we are the species, we Homo sapiens are the species which have very great curiosity regarding the origin of life. We want to know how the earth was formed. We want to know how the other living species have been formed or created on the earth. Okay, and we want to find the reason behind their extinction and their uh, again their endangered, how these species have been originated। Okay, so we want to find the reason behind their extinction and we also want to find the reason behind their origination। Okay, how these species have been originated on the earth। Okay, now, different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. So there are a lot of biologists, zoologists, scientists who have contributed or who have given us a lot of theories regarding the origin and evolution of life. Okay, out of which we accept gradual development of living organism. This theory, the theory of gradual development of living organism, is accepted universally। Okay, if we peek into an history, what we found that many philosophers and religious scholars have written their views about formation of life. So you will find old scriptures wherein the philosophers and religious scholars have written their views, have expressed their views regarding the formation of life. Okay, there seems to be a thorough discussion over the formation of universe in various cultures like Indian, Chinese, Roman, Greek, etc। So every culture, जितनी भी सभ्यता प्रेजेंट है आज के दौर में और प्रेजेंट थी एंशिएंट टाइम में, उन सभी सभ्यताओं ने ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ कैसे फॉर्म हुई है अर्थ के ऊपर, उसको स्टडी कर किया है। ओके, और उसके ऊपर अपने थेरीज को पुट फोर्थ किया है, मतलब हमें थेरीज दिए हैं उन्होंने। Now, various cultures have noted different type of information about planets, stars. Okay, then the Panch Mahabhuta. Okay, it is one of the ancient scripture which belongs to India. Okay, and it describes about the formation of five pillars of life. Okay, then living organisms, etc., in the form of poetry, stories, and religious sacred books. So, uh, in the form of poetry, stories, and religious sacred books, all this information about the formation of life
have been given to us. Okay. Now, what is the theory of evolution? Theory of gradual development of living organisms. According to this theory, first living material, that is protoplasm. Okay, this is very important. According to science, the first living material was protoplasm, and it has been formed in the ocean. The due course of time, unicellular organism was formed, and this protoplasm has converted or has been formed ideally into a unicellular organism. Gradually, changes occurred in the unicellular organisms from which larger and more complex organisms were formed. Okay, so certain changes occurred in these organisms, and complex organism, the simple organism, have been converted into complex organisms. Okay, all those changes were slow and gradual. Okay, and this changes, the change of simple to complex organism, was very much slow. Okay, and scientists have predicted that these changes took almost 300 crore years. कितने साल गए सिंपल सेल को कॉम्प्लेक्स सेल में कन्वर्ट होने के लिए, सिंपल ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने के लिए 300 करोड़ साल गए हैं. आया समझ में आप लोगों को? Now, changes and development in living organisms had been all round and multidimensional, and this led to evolution of different types of organisms. Okay, so certain changes occurred in this organism, and different types of organisms have been formed. Okay, hence this overall process is called as evolution, which is organizational. ये जो complete process है, यूनिसेलुलर, देखो प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले डेवलप हुआ, वो कन्वर्ट हुआ यूनिसेलुलर सेल में, फिर वो सेल कन्वर्ट होता है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ऑर्गेनिज्म का आपको कन्वर्जन देखने मिलता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर लिविंग थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड. ओके, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है. ओके, now progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution. Now one more definition of evolution is given, and what is it? Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution. मतलब प्रोग्रेशन जो हुआ है, जो प्रोग्रेस हुआ है प्लांट्स और एनिमल के स्पेसीज में फ्रॉम द एंसेस्टर्स, उस प्रोग्रेस को हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन. ओके, सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा है, इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा है. अब ये जो इवोल्यूशन के बारे में साइंटिस्ट ने हमें बताया है, तो ऑब्वियसली विदाउट प्रूफ इन साइंस यू कैन नॉट स्टेट एनीथिंग. ओके, एनी थियरी और एनी लॉ इज गिवन आफ्टर सर्टेन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. So there are some experiments and observation of scientists which have led us to this theory of evolution. So we will study those evidences, those proofs and observation in the next lecture. Okay, until then, goodbye.